अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लिपिड बायोमोलेक्यूल। सो लिपिड्स को हम अगर देखें, द स्ट्रक्चर्स ऑफ लिपिड बायोमोलेक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ मोस्टली अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. So lipids molecules are heterogeneous group of compound related to fatty acids, but they are insoluble in water but soluble in organic solvents such as ether, alcohol, chloroform and benzene. So lipids are mostly composed of carbon, hydrogen and oxygen atom, but sometimes it is composed of phosphorus. The carbons are linked together in a long chain जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और are ring. Lipids जो होते हैं ना, it's a type of compounds produced by plant and animal that including fats and oil. लिपिड्स के फंक्शंस की बात करें तो लिपिड्स हैव डिफरेंट फंक्शंस और यूज इन लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स like storing energy, regulating metabolisms, signaling hormones and providing the structure of cell membrane. Here we will see the different structures of lipids, but here is one thing is most common, which is fatty acid molecule. So fatty acid molecules क्या होते हैं, differ in their length, यानी कि number of कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन चेन क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, बट द एंड इनकी जो कहाँ पर होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर होती है. सो द हाइड्रोकार्बन चेन एंड इज हाइड्रोफोबिक, मीन टू से कि ये जो एंड होती है ये क्या होती है, वाटर अवॉइडिंग होती है, वाटर को रिपेल करती है, जबकि जो नेक्स्ट एंड होती है जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कहते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होती है, मीन टू से वाटर लविंग ग्रुप होते हैं. कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना इज मेड अप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बट द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम इन लिपिड इज नॉन पोलर, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि लिपिड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. फैटी एसिड को अगर देखा जाए तो फैटी एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे हैव नो डबल बॉन्ड अलोंग देयर चेन, इनके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखें तो इनके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, एक या एक से ज़्यादा अलोंग देयर चेन. सो फैटी एसिड्स में क्या होता है कि इनमें दो साइड्स होते हैं, ठीक है, एक ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जिनको हम कहते हैं, दूसरी जो होते हैं ना सिस होती है. ट्रांस में क्या होता है कि इफ़ हाइड्रोजन आर अपोजिट टू द साइड ऑफ डबल बॉन्ड, के डबल बॉन्ड की साइड के अपोजिट हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशंस होगी, मीन टू से द चेन विल रिमेन रिलेटिवली स्ट्रेट एंड मॉलिक्यूल्स कैन टाइटली पैक टुगेदर if the hydrogens are on the same of the double bond. So it is a cis configurations, and then the chain will have a link to it and molecules cannot tightly pack together. तो molecules जो होंगे क्या tightly pack together नहीं होंगे. Lipids are a derived collection of naturally occurring organic compounds with important role to play. First one is fat and oil. तो lipids क्या होते हैं, स्टोर एनर्जी फॉर सेल. इन एनिमल के अंदर देखें तो दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस फॉर नर्व एंड कुशंस इंटरनल ऑर्गन्स. Phospholipids from cellular membrane and play an important role in fusion, and steroids are formed from cholesterol and are involved in cellular communications. Carotenoids देखें तो carotenoids क्या होते हैं, are pigments use help to absorb energy in plant, algae and photosynthetic bacteria, but the waxes are from a barrier to exclude water in both plant and animals and are found in leaf, air canals and the honeybee. टाइप्स की बात करें तो जो लिपिड्स होते हैं कैन बी
organized into one of the three main classes: simple, compound lipids and derived. सिंपल में क्या होता है, जो एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के एंड अल्कोहल लाइक ट्राइग्लिसराइड्स एंड वैक्स, बट कंपाउंड लिपिड्स के अंदर देखें तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड एडिशनल ग्रुप आर फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ड्राइव्ड लिपिड्स में देखें तो सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल और ऑर्गेनिक लिपिड्स, स्ट्राइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स। The main types of lipids is triglyceride. The biomolecules are made up of 4 simpler molecules. इनमें क्या होता है कि वन जो होता है triglyceride are composed of 1 glycerol and 3 fatty acid molecules. जब 1 glycerol और 3 fatty acid molecules आपस में बनते हैं तो क्या बनता है, इनके अंदर एक एस्टर बॉन्ड बनता है, 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं, और जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं वो क्या होता है। नेक्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड्स. दे हैव ग्लिसरॉल बैकबोन and 2 fatty acid chain, but instead of a third fatty acid they have a phosphate group within are attached. The third main types of lipids is strides. All strides are made up of 4 rings. They differ from each other based on the group attached to the ring. The fourth one is waxes are ester of fatty acid consisting of an alcohol molecule bonded to fatty acid through ester linkage. So wax is strongly hydrophobic, thus serve as an effective water repellent. I love.